Heartiest greetings to all my dear students. Today in this video, I am going to tell you some important questions for the coming exams. This is for class BA third semester. Let us take up short answer type questions first. सबसे पहले sonnet 18 के important questions. What does the poet say about the month of May? How does the poet compare eternity with mortality? How does the poet talk about death? These are all the questions from Sonnet 18. Now from the poem Know Then Thyself. Question number 1. How is man a confused being? Next. How is man stuck between an angel and an animal? Next. Explain the glory, jest and riddle of the world. These were all the questions from poem 2, Know Then Thyself. Now from the poem Elegy Written in a Country Churchyard. Question number 1. Who are the unhonored dead? Next. What does the epitaph of the poem refer to? Next. What do you understand by short and simple annals of the poor? Next. Why does the poet use domestic similes? Now from the poem The World is Too Much with Us. Question number 1. Why does the poet want to become a pagan? Next. What are we out of tune with? Next. What is the sordid boon? Next, from the poem Ode on a Grecian Urn. The first very important question from this poem is, what does the urn symbolize? Next, comment on beauty is truth, truth, beauty. Next, which figures on the urn do haunt the poet? Now from the poem My Last Duchess. Question number 1. What was the envoy curious about? Next. Why did the duke want to remarry? Now from the poem When You Are Old. The first question. Why does the poet call the soul of his lover a pilgrim? Next. How does Yeats nostalgically recall his lover? Next. What will happen to the lady when she turns old? Now from the poem Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. Question number 1. What type of strength does the poet pray for? Next. How can people achieve perfection? Next. From the poem The Bengal Sailors, written by Sarojini Naidu. First question. What are the shining lords? Second. Why does the poet call the bangles token of radiant lives? Next. Explain the phrase journeyed through life midway. Now, taking up the last poem, Another Woman, written by Imtiaz Darkar. The first question. Why do the in-laws speak ill of the woman's parents? Next. How is the woman in the poem insulted and humiliated by her in-laws? These were all the important short answer type questions. Now, let us take up long answer type questions. The first question. Evaluate the poem My Last Duchess as a dramatic monologue. Next. What is Pope's concept of man in Know Then Thyself? Next. From the poem The World is Too Much with Us. The sonnet is a criticism of life in modern mechanized milieu, or the poet prefers paganism to worldliness. Next. What is Pope's concept of man in the poem Know Then Thyself? Next. Theme of transience and permanence in Ode on a Grecian Urn. Next. Role and significance of time in the poem When You Are Old, written by W.B. Yeats. Next. Significance of title or gender oppression issues in the poem Another Woman, written by Imtiaz Darkar. These were all the important long answer type questions. इसके बाद पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द पोइटिक फॉर्म्स. 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है. इसका वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसका आप स्क्रीनशॉट में भी लेके देख सकते हैं. पोइटिक फॉर्म्स, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोइटिक फॉर्म्स हैं वो पेपर में लिखने आएंगे आपके. क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोइटिक फॉर्म्स, और इसमें आपकी चॉइसेस भी आएंगी.
important poetic forms, dramatic monologue, elegy, alliteration, lyric, personification, simile, sonnet, imagery, irony, metaphor और odd. ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं. इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं और डेफिनेशंस आपको लिखनी है पेपर में. और आपका कभी कभी इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पोइटिक डिवाइसेस कुछ लाइंस दी होंगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं उनके हेडिंग्स मैंने आपको दे रखे हैं. सोनेट 18, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, व्हेन यू आर ओल्ड एंड द बेंगल सैलर्स. नाउ कमिंग टू द ग्रामर सेक्शन. ग्रामर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रहेंगे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ये आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें से काफ़ी कुछ आ जाएगा. उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स आर सोशल मीडिया, द रोल ऑफ सोशल मीडिया, द रोल ऑफ यूथ, पॉल्यूशन, माई एम इन लाइफ, विमेन एम्पावरमेंट, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन. एक आप वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन भी कर सकते हैं. कॉलेज लाइफ पे भी कई बार आ जाता है आपका पैराग्राफ. तो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स फॉर द कमिंग एग्जाम्स. और इसमें जो ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैंने आपको दे रखी हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इनके आंसर्स भी दे रखे हैं. पहली एक्सरसाइज जो आपके पेपर में आएगी वो फिलअप्स की आएगी. ऑप्शन आपको जीरंड या इन्फिनेटिव में से आपको फिल करना होगा. इसी तरीके के आएंगे जो मैंने आपको इसमें दिया है. आपको एक्सरसाइज इसी तरह की पेपर में पूछी जाती है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आंसर्स भी लास्ट में दे रखे हैं. कई बार एक्सरसाइजेज आती हैं आपकी प्रेपोजिशंस फिल करने के लिए, या कॉम्बाइन द सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इस तरह से एक्सरसाइजेज भी पूछी जा सकती हैं. फ्रेजल वर्ब्स की, सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न्स की, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके ग्रामर के लिए. इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा. ट्रांसक्रिप्शन भी आपका पेपर में आता है, तो ये सारा आप डिटेल में कर लीजिएगा. इनमें से आ जाएगा आपका. These were all the important questions for BA third semester English. All the best for your exams. Thank you and have a nice day.